तो गाइज अब हम काशीज़ का ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे एंड 3-in-1 कॉन्टूर पैलेट। क्योंकि नाइट लुक है तो आप लोग थोड़ा सा डार्क में जाते हैं। Eyebrows time. तो गाइस प्लीज डोंट जज मी, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बट आई स्टिल ट्राई। मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी स्टेप्स आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोग मुझे फॉलो कर सकें, बिल्कुल एक आम लड़की की तरह जो ईद पे तैयार होती है अपने घर में। लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा चिट चैट की थी और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला वीडियो लंबी हो गई है, तो इसलिए आज मेरी कोशिश है कि मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो मेकअप पे रहे और बातों पे कम। फिर किसी दिन हम चिट चैट के साथ मेकअप वीडियो करेंगे। Guys, I'm done with the eyebrows, so I think we should start the eye makeup. उससे पहले मैं लूज सेटिंग पाउडर ज़रा लगा लूँ ताकि अगर आई मेकअप फॉल गिरता भी है तो वो हम बाद में वाइप ऑफ कर दें। मिनीसो की प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं, तो इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग टू बाय some makeup products from Miniso, go for it. It's worth buying. अगर आप लोगों के आसपास कहीं पे मिनीसो का आउटलेट नहीं है तो tosharing.pk से आप मिनीसो की प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एज यूजुअल। फ्रेंड्स, आज हम लोग आई मेकअप पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बहुत कम टाइम में बहुत आला वाला मेकअप करेंगे आज। उषा की ये प्यारी सी आई शेडो पैलेट यूज़ करेंगे और आई बी यूजिंग इसके साथ बेस में दिस कलर।
अब वही मुन्ना सा ब्रश लेके हम इसके यहाँ से कॉर्नर्स में इसको मर्ज कर देंगे। अच्छा काशी के कुछ ब्रशेस जो छोटे वाले हैं ना, मतलब आई ब्रशेस हैं, वो मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं लगे। फेस ब्रशेस जो है काफ़ी अच्छे हैं इनके। ये देखिए कहीं से कोई ब्रिसल्स जो है आपको निकलते हुए नजर नहीं आएंगे, बट अभी जब मैंने आई मेकअप किया है तो उसमें जो छोटे ब्रशेस हैं उनके काफ़ी ब्रिसल्स जो हैं वो निकल रहे हैं और एक में यहाँ पे चला गया था। अगर यहाँ पे मेकअप करते करते थोड़ी शेप खराब हो भी जाती है तो घबराना नहीं है, उसका भी एक हल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सॉरी, पूरा रमजान पकौड़े, समोसे, ब्रेड रोल, कचौरी और क्या कहते हैं ब्रेड पॉकेट्स और चीज़ बॉल्स और पिज़्ज़ा पफ और चिनी चांगा और पनीर क्या कुछ खा खा के अब एंड पे आके जब ईद का टाइम आया है तो गला खराब हो गया। अच्छा तो इतने छोटे से ब्रश पे आप बेस लेकर, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी शेप खराब हो गई तो वहाँ से इवन करके इसको तो आप बाद में मर्ज कर सकते हैं फिंगर से भी, पफ से भी, तो वो इजीली आपका इस तरह से शेप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसको फाइनल टच दूंगी आईलैशेस लगाने के बाद, और आईलैशेस हम यूज करेंगे ये वाली काशीज़ का मस्कारा मस्कारा मस्कारा